Hey, Namaskar, children. This is Disha ma'am, and we are going to learn English, right? What did we do yesterday? We completed chapter number 9, textual exercise. Hope you have done the homework, which was story writing. उसके साथ ही there is a trail of tenses which we won't be doing right now because there are things which we need to learn before jumping to the trail tenses, right? Today, before starting the chapter, मुझे एक बात बताओ. When we talk about some weird character, हमने जैसे ये स्टोरी सुनी मिडास टच, तो वी माइट मैनी ऑफ यू माइट हैव थॉट कि क्या ये सही हो सकता है. आई मीन अगर मुझे भगवान ऐसा पावर दे दे दैट वी आई वॉट एवर आई टच बिकम्स गोल्ड या वैनिशेस. अगर एक आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन द मूवी मिस्टर इंडिया व्हेन आई वाज यंग. ये मूवी आई थी एंड वी किड्स एज किड्स वी लव दैट मूवी. वाई? बिकॉज मिस्टर इंडिया में एक ऐसा वॉच माना ऐसा गैजेट था that made that person invisible, right? ये हीरो तो अभी आप देख रहे हो जो सब टीवी पे आता है, वीर वाली स्टोरी, राइट? बट व्हेन आई वाज यंग वी हैव ग्रोन अप वाचिंग मिस्टर इंडिया. मिस्टर इंडिया हैड द सेम कंसेप्ट. उसमें एक डिजिटल एक वॉच थी या रिस्ट बैंड जिसे हम बोल सकते हैं, एंड इट मेड दिस गाय द हीरो, मतलब जो अनिल कपूर जो हीरो थे, इट मेड हिम विजिबल. एंड वो बुराइयों के साथ लड़ता है, अंत में सच्चाई की जीत होती है. सेम कंसेप्ट वी हैव इन दिस टीवी सीरियल दैट इज हीरो, जो सब टीवी पे आता है. एंड मेनी ऑफ यू आर फॉन्ड ऑफ, आई नो, बिकॉज आई हैव वन ऑफ द फैन इन माई हाउस ऑल्सो, माई सन. ही लव्स वॉचिंग वीर एंड ही दिस बालवीर एंड यू नो हीरो. सो हीरो क्या करता है? हीरो के पास एक रिंग है, एंड एज सून एज ही वेयर्स इट ही गेट्स दैट पावर टू बी इनविजिबल, राइट? नाउ जब ये सारी चीज़ों की बात आती है, इट मेड मी थिंक दैट क्या ये पॉसिबल है सही में, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट a small poem which was written years and years before, right? This poem is a very legendary poem. जनरेशन्स टू जनरेशन्स ये बातें, जैसे मैंने मिडास टच की बात की थी कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स ये पास होती है. ये स्टोरी बहुत एक दूसरे को, जैसे दादियाँ हैं, नानी हैं, ये सब हमें जब स्टोरीज़ बताती हैं तो द स्टोरीज आर बीन पास्ड फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स. मैंने सुनी हुई हैं. आई टेल टू माई किड्स, यू गाइज वुड बी टेलिंग टू योर किड्स, दैट वेज. सो टुडे वी विल बी discussing or reading a poem with equally weird concept, unique and weird, but ये लिखी गई थी in the 18th century. जैसे अभी 2020 चल रहा है, वैसे जब 1857 1897 ऐसा जब लिखा जाता, that time this story took place. So before going into the story, before going into the poem, let me give you a fine hint of this poem. ये पोएम में क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली बेसिकली अ स्टोरी विच इज़ रिटन इन अ पोएटिकल फॉर्म. ये पोएट्री की तरह लिखी गई है. बेसिकली इट्स अ स्टोरी. स्टोरी में क्या होता है? देयर इज़ अ बॉय नेम्ड लैम्पटन. ही इज़ एन एयर ऑफ, एयर माने वारिस्ता. इसमें एच इज़ साइलेंट, HEIR. सो एच बिकम्स साइलेंट, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज एयर. ही इज़ एन एयर ऑफ अ किंगडम. एंड वंस ऐसा कहा जाता है कि जब सारे प्रेयर्स करने जाते, तो इज़ अ कैथलिक कंट्री, सो दे ऑल वेंट टू चर्च फॉर प्रेयर. आपने आई होप चर्च देखा होगा, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वैसे कैथलिक्स है जो क्रिश्चियंस है वो चर्च में जाते हैं. एंड व्हेन दे were praying in the
church, this young boy Lambton skipped his prayers. उसको एक दिन मूड आया कि मुझे जाना नहीं है, and I would rather go for fishing. So he went for fishing. तब वहीं से एक विच, एक जैसे छोटा भीम में अगर आपने देखा हो दैट गंदी परी जो आती है वो बुरी परी. सो दैट विच पास एंड शी टेल्स कि बी केयरफुल, यहाँ कुछ करोगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी योर्स. ये मैं स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है. दिस इज द स्टोरी विच इज बिन हाईलाइटेड विद दिस पोएम लैम्पटन वॉर्म. सो where I was, yes, little Lambton ignored this and उसने एक छोटा सा ईल माने छोटा सा अर्थवर्म जो पीस के दाने में निकलता है, पता है, वटाना जो हम खाते हैं ना, मटर जो हम छीलते हैं, उसके इतनी छोटी सी एक वर्म होती है ईल, या पानी में जो टेडपोल के साइज का होता है, दैट इज ऑल्सो नॉन एज ईल. सो इसने जब फिशिंग किया तो उसमें से एक ईल निकला. एज इट वॉज वियर्ड एंड ऑफुल, लैम्पटन ने क्या किया, उस ईल को डाल दिया वेल में, फेंक दिया. एंड वेंट बैक टू हिज होम एंड अपने काम में लग गया. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर years and years हैज पास्ड, ये नाइट बन गया, सैनिक बन गया. ही वेंट टू फाइट फॉर हिज किंगडम एंड ऑल. वंस व्हेन ही रिटर्न्ड बैक टू सी हिज फादर्स किंगडम, व्हाट ही फाउंड वाज कि वो जो ईल थी जिसको उसने वेल में फेंका था, दैट हैज़ ग्रोन ऑफुल इन द साइज. ऑफुल मीन्स वेरी वेरी बिग, बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी. 7 times वो माउंटेन, मतलब जो किंगडम थी, जो वहाँ की जो किंगडम थी, उसका जो मतलब जो विद था, जो माउंटेन के ऊपर ये पूरी राजा थे, किंगडम थी, उस पूरे किंगडम को वो 7 बार लपेट ले, उतनी बड़ी हाइट हो गई थी, लेंथ हो गई थी दिस ईयर की, दिस वॉर्म की. It had grown into that big size. And it used to swallow the kids. जीते जागते बच्चे खा जाती थी, भेड़ बकरियों को खा जाती थी. Animals she used to eat, she used to swallow, because इतनी बड़ी ईल है या इतना बड़ा worm है या उतनी बड़ी fish है, तो उसको खाने के लिए कितना चाहिए होगा, right? एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली कि भाई ऐसी स्टोरी आती थी बीच में कि भाई राजा ने उस ईल से प्रार्थना की थी कि यू डोंट किल आवर चिल्ड्रन, अब जो बोलोगे वो खाने को हम देंगे. तो दे यूज टू सर्व दैट ईल, दैट वॉर्म. बट वंस व्हेन दिस लिटिल लैम्पटन जब बड़े होके आए, सर जॉन लैम्प बन के आए, एट दैट टाइम किसी वाइज मैन से इन्होंने सलाह ली कि अब इस वॉर्म को कैसे मारा जाए. एंड उन्होंने वो नुस्खा दिया, जैसे भीम कैसे सब कुछ वो भोले बाबा को पूछ के सब कुछ करता है, राइट, वैसे बूढ़े बाबा को पूछ के, वैसे ही दिस सर जॉन लैम्प आस्क्ड समबडी. तो ही टोल्ड दैट आपने जिस पानी में से उस ईल को निकाला था, उसी पानी में जाके उसको मारोगे, देन ओनली इट विल डाई. Otherwise, it will keep on growing and growing and growing. So eventually, he goes back to that place, and वहाँ पे Sir John Lamb इस worm को मार देते हैं. If you'll find out in YouTube or Google करोगे ना Lambton worm, you'll get so many versions of stories and songs written on this प्रॉपर स्टोरीज. बहुत सारी लिरिकली साउंड अच्छी तरह से गाए गए हैं. सॉन्ग्स आर देयर एंड देयर आर पोएट्री इज रिटन. हर एक का अलग अलग वर्जन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, राइट. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न दैट ब्यूटिफुल एंड यूनिक पोएम. द पोएम्स नेम इज The Lambton Worm. Worm माने
कीड़ा जो होता है वो, लैम्पटन worm. चलो, put your finger on what I'm reading. One morning, young Lambton went fishing in river Ware. Ware is the name of the river. And he caught a fish upon his hook that looked strange and queer. Queer माने unusual, अजीब सी थी, गंदी सी. What kind of fish it was, young Lambton could not tell. He did not wish to take it home, so he threw it down a well. He didn't wanted to take it to home because गंदी सी थी, अजीब सी थी, मुंह एकदम ऐसा पिचड़ा हुआ. So he didn't take the fish, he threw it in the well. But the worm got fat and grew and grew and grew an awful size. Awful, very, very big, very bad and unpleasant size. बहुत बड़ी लंबी सी. You can see this worm is starting from here, यहाँ से जाके वहाँ तक जा रही है. It had a great big teeth and great big mouth. Clear? And great big scary eyes. You can see this everything in the picture. Brave Sir John Lamb. So home he came and caught the beast. This is the story after he comes back from his fight. Brave Sir John Lamb. So home he came and caught the beast and cut him in two halves. Two halves माने cut कर दिया दो हिस्सों में. And that soon stopped the worm who ate sheep, lambs and cows. जैसे मैंने आपको बोला था, this worm was eating sheep, lambs, cows. Cows माने calf का plural. Calf is small cow. Baby cow को हम calf बोलते हैं, right? And calves, cows is plural of calf. Right? Now understood the whole poem? See, I'll explain it paragraph wise one more time. One morning, young Lambton is the name of the kid, surname होती है उनकी. It's a foreign name, so that's fine. One morning, young Lambton went fishing in river Ware, right? As I told you, the story ऐसी है कि उसने अपनी prayers skip करके he went to fishing. And he caught a fish upon his hook that looked strange and queer. अजीब सी ही, unusual सी fish उन्होंने पकड़ ली. What kind of fish it was, young Lambton could not tell, right? He was not able to answer what kind of fish it was. It didn't look good. He did not wish to take it home, so he threw it down a well. Where did he throw it? He threw it in the well. It was a small worm which he did not like to carry home. But the worm got fat and grew and grew and grew an awful size, right? It became very, very, very big and awful. It had a great big teeth, big mouth, and great big scary eyes. Brave Sir John Lamb. Now this is kids जब वो बड़े होके आए. Brave Sir John Lamb. So home he came and caught the beast and cut him into two halves. उनको कट कर दिया. और मैंने जैसे बताया था, द स्टोरी, द लेजेंड टेल्स दैट वे कि भाई उसको उसी पानी में लेके वहीं से मारा था. एंड दैट सून स्टॉप द वॉर्म हु एट शिप, लैम्स एंड काव्स. राइट? ये वॉर्म इतना बड़ा है तो सब कुछ खा जाता था. सो ही कट दैट इनटू हाफ्स. क्लियर? चलो, अंडरस्टूड द पोएम. चलो, लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर. Answer the following question. First one, what did the fish look like? Fish कैसी लग रही थी? The fish looked like a worm, right? It was looking like a small worm. It looked strange and queer and it looked like a worm. Don't worry, I'll be giving the answer. Why did young Lambton throw the fish in the well? Because he could not tell whether it was a fish or what else. So he threw it down into a well because he was not able to recognize what kind of creature it was. It was looking like a worm. कीड़े जैसा था, eel जैसा था. That is why he threw it in the well. Why is the worm called awful? Why is it awful?
Because in the second paragraph it is told that it grew and grew and grew. वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया. Right? It had weird face. You can see big scary eyes, big mouth. Generally, fishes are very tiny little creatures. Instead of that, this fish had a big mouth, big teeth, and big scary eyes. So, and its size was very big. So, this fish was called awful. What happened to the awful worm in the end? What happened? Sir John Lamb cut the awful worm into halves. In the end, right? उसको 2 हिस्सों में कट कर दिया. Clear? Easy है. Identify the 10s used in the poem. That so we can see, we can read it. The first line: went, caught, looked, was, threw, got, grew. These many words are there. What does it tell? It tells that the whole poem is written in the past tense. Which tense? Past tense. Because this is a story. As I told you कि ये एक story थी, एक पुरानी legend है जो when I was small I've heard it from my grandmother. This is a foreign folk tale, right? But I have heard this story. So this is a story which was written in a poetry form. क्लियर. अगर आप चाहो तो गूगल में या यूट्यूब में अगर आप देखेंगे लैम्पटन वॉर्म अगर आप सर्च करेंगे यू विल गेट टू नो द स्टोरी अबाउट दिस वॉर्म. क्लियर. सो बेसिकली इट वॉज a fish who looked like a worm, and when he caught this fish he threw it in the well because of the weird looks. Slowly and gradually this worm grew and started eating these sheep and calves and lambs. After years and years, Sir John Lamb, he was a very brave personality, and he cut that worm into 2 halves. Right? So this is the story of the Lambton worm. So today's homework would be read the poem once and write the question answer in your fair notebook. Clear? First of all, जब आप heading लिखेंगे, you will write today's date, the Lambton worm, and by anonymous, because if we don't have the writer of the poem, the poet's name is not mentioned. So we'll write anonymous, ANONYMUS, anonymous. Clear? And then after writing the word meanings, we'll go to the question answers. Don't worry, I'll be sending the answer key for this question answers. Okay? Chaliye. Till we meet tomorrow. This is Disha ma'am signing off. Bye bye. Take care.